ये आपने क्या किया? तो वेद व्यास जी शिष्य हाथ जोड़ लिए, गुरु जी जैसे आप कहे। तब नारद जी ने एक बात कही, तो आपके शोक I का know कारण him. क्या I है? know what is the reason of your unhappiness, unsatisfied. Why आपने you are unsatisfied? I know the reason behind श्री your कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं unsatisfaction. किया, So you never यही आपके शोक का कारण है। you never describe वेद the व्यास जी ने कहा नहीं, ऐसी glories बात of नहीं। Sri Krishna. So that's why गुरुदेव, you are मैंने तो sad. महाभारत So ग्रंथ लिखा then Vedvyaji replied, I have और श्री composed महाभारत जी में Mahabharata. And श्री in कृष्ण की लीलाओं Mahabharata, का मैंने so वर्णन I किया। have described the Krishna Leela also. नारद जी ने कहा, then हम Narad ji उन replied, महाभारत वाले श्री so कृष्ण की I बात am नहीं not कर asking रहे about the जो Krishna युद्ध स्थल पर खड़े so हैं who was in the battlefield of और जो Kurukshetra उपदेश दे रहे and हैं, who was जो वहाँ पर advising about Bhagavad Gita. युद्ध के लिए प्रेरणा दे रहे So हैं। who was guiding वहाँ पर Arjuna उन्होंने कोई for लीला the थोड़ा ना war. की। So that in that वहाँ तो Kurukshetra, बस युद्ध की in बात ही होती battlefield of रही Mahabharata, so कि ये there कर लो, there ऐसा is कर लो, no ऐसा कर लो, Leela. बस गीता जी So का ज्ञान दे दिया। there only he हम उन guided कृष्ण की Arjuna बात नहीं and कर रहे, advised Gita. हम उन कृष्ण की बात कर रहे हैं जिन्होंने I'm वृंदावन में not सुंदर speaking सुंदर about लीलाओं को this किया। Krishna. So I am asking about the इसलिए Krishna who आपने played so many वृंदावन की different लीलाओं को pastimes नहीं in लिखा, Vrindavan. ये कारण So है you कि have आपका मन never उदास है। come right ध्यान से the समझना। Leelas of Vrindavan which Krishna played मेरी in एक the प्रार्थना holy है land of Vrindavan. सभी So श्रोताओं से, सभी भक्तों से, requesting everyone, आप लोग so अपने the घर से यहाँ listeners, पर चलकर आए, so they came here, बड़े प्रेम से, they come श्रद्धा here, से so with their और बड़ी Shraddha शांति and से यहाँ पर very- कथा हो रही है। very peacefully Hari Katha is going दूसरी on. दूसरी जगह पर बड़ा हल्ला So होता है, in other places, सब माताएं बातें some करती हैं, noises, नहीं तो sounds फोन ही are बज there, पड़ता so है। people are talking sometimes. लेकिन यहाँ phones पर are तो सब लोग ringing, सेक्टर but वाले here, बड़े so all people ध्यान are से very कथा सुन gentle रहे हैं। and very तो sincere. जब ऐसा होता है तो बोलने वाले को भी आनंद आता है। So when this kind समझ of आई बात? atmosphere is going on, then बस the एक speaker मेरी also प्रार्थना become है, happy to speak Hari Katha. जब मैं आकर यहाँ बैठ जाऊं, So and Gurudev is requesting उससे पहले जिसको आकर माथा टेकना है, कुछ करना है, कर ले। लेकिन जब मैं यहाँ आकर बैठ जाऊं और कथा आरंभ हो जाए तो कोई आगे ना आए। जहाँ पर आए हैं वहीं बैठ जाओ, अब वहीं से प्रणाम करो, ठाकुर जी तो वहीं से देख लेंगे। ये थोड़ा नीचे आकर एकदम भगवान देख लो, मैं आ गया, हाजिरी लग गई। और सच्ची बात बताऊं, सारी पोले खोल दूंगा मैं। ये हाजिरी भगवान के सामने नहीं होती, वो तो दूर से भी देख लेंगे। ये हाजिरी होती है सेक्टर वालों को दिखाने की। मैं आई हूँ, सब लोग देख लो, मैं भी धार्मिक हूँ, मैं भी भागवत सुनती हूँ। इसलिए सेक्टर को मत दिखाओ, भगवान जी को दिखाओ, दूर से देख लेंगे। चलो ये भी एक फॉर्मेलिटी है, दिखाना तो पड़ता ही है। देवेंद्र जी ने, वर्मा जी ने बुलाया, नहीं आए तो कल को पूछेंगे तू आई नहीं। एक बात स्पष्ट बोल दूं, अगर किसी औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए आओगे ना, तो भगवान की आपके साथ औपचारिकता ही करेंगे। और यदि आप प्रेम के साथ कथा सुनने के लिए आओगे ना, तब उनका हृदय आपके लिए खुलेगा। यहाँ कोई औपचारिकता नहीं है। और जो कभी ऐसा कुछ है तो 9 बजे के बाद जो मर्जी करना। कथा का समापन हो, जब जाएंगे तब आप एक दूसरे के गले मिलो, हाथ मिलाओ और दिखा दो कि हम आए हैं। ठीक है, बस 7 और 9 के बीच में कर्फ्यू लग गया, आगे कोई नहीं आएगा। और जो आगे आए ना उसको कोविड हो जाएगा। ऐसे कह रहा हूँ मैं, सच्ची नहीं कह रहा। या फिर ये कह दूं, जो आगे आएगा ना उसकी चप्पल चोरी हो ही जाएगी। नहीं तो 3 दिन तक आपके घर में पानी नहीं आएगा। अब देख लो कौन आगे आना चाहता है। ऐसे ही बैठे रहो चुपचाप, शांति से, बड़ा आनंद आ रहा है। बोलो राधे राधे।
अब याद है मैं क्या बोल रहा था? So now we can बीच में remember तो मैंने what बात we घुमाई say. इसलिए So in जरा between this देखो आप लोगों Harigatha, को I'm याद ही हो speaking रहा है, some ध्यान भी दे रहे another हो कि thing नहीं दे रहे? that I'm क्या बोल रहा था? examining कौन सी कथा that सुनाई how थी? much sincerely you were listening. कहाँ पर छोड़ा था? So in which point we जरा लगाओ stop? जोर इधर। In which point of और रोज Harigatha we कुछ एक stop? बात सीख कर जाओ। So and every day you people should learn something. हाँ? हाँ देखो ये ध्यान से सुन So रहे हैं। these people they are listening carefully. So नारद they are जी ने repeating कहा, that Narad ji spoke to आपने Vedvyas ji वृंदावन वाले that कृष्ण की you have कथाओं को never नहीं लिखा, glorified the Krishna, इसलिए the आपका Krishna मन of उदास है। Vrindavan. महाभारत के So कृष्ण you की बात have तो लिख written दी, about the Krishna of लेकिन Mahabharata. महाभारत में कृष्ण ने So, कृष्ण ने but in क्या माखन चोरी की? Mahabharata, Krishna क्या वहाँ पर never रास steal किया? butter. So यशोदा that in मैया ने डांट Mahabharata लगाई? he ये never सब तो played नहीं हुआ। Ras Leela. So in Mahabharata, Yashoda इसलिए आपका मन बड़ा Mata उदास है। also never chastised Krishna. लेकिन यदि आप वृंदावन So बिहारी if someone, श्री राधा so रमन कृष्ण if की बात so लिखेंगे Vrindavan Bihari, so if तो you are आपका मन बड़ा glorifying प्रसन्न हो जाएगा। the Vrindavan Bihari, Shri Raj Bihari यही एक Krishna, कमी है। so so तो this वेद व्यास is जी ने the कहा, fall. गुरुजी, So थोड़ा सा और स्पष्ट Vedvyas करके ji कहिए तो is explaining. बात कुछ So समझ नहीं आ रही। Vedvyas ji is explaining. Please, oh Gurudev, तो please नारद जी ने explain it कहा एक बात clearly. बताओ, So क्या आपने कहीं पर भी किसी शास्त्र में बात लिखी so कि मातम और पुत्र भावे कोरे बंधन so Vedvyas अति ji, हीन ज्ञाने कोरे Narad ji लालन is पालन। asking that Mata more क्या putra मतलब? putra bhave kare यशोदा bandhan मैया ati din hin bhave kare बालक na कन्हैया balan. को देखकर So Mother Yashoda, उसकी नटखट So नटखट लीला को when देखकर माखन चोरी को देखकर so यशोदा Krishna मैया still कान मरोड़ butter, देती है so he और did हाथ so में छड़ी ले many लेती है naughty activities और in वो कन्हैया जो Vrindavan, भगवान and है then अपनी मैया के आगे Mother आंख रगड़ रगड़ Yashoda कर रोता है। tied Krishna, chastised या फिर ये Krishna, सोच लो and आंखों को sometimes मलते also और आंसुओं को Mother पोंछते, Yashoda slapped अरे Krishna. बदमाश दो चार को So, निकलो, oh wicked, oh naughty आज Krishna. मैया बड़े क्रोध में है। So you have done दो so many चार naughty आंसू निकलेंगे तो activities. मैया So क्रोध that शांत time हो when जाएगा। Mother chastised Lord Krishna, the small boy ऐसी Gopal, सुंदर then लीला। Gopal, he cries sometimes, कन्हैया he घर घर making में some जाकर drama, माखन की चोरी so, करते so that सबके he is मन को, fearful, सबके he is चित्त showing को that, चोरी oh करते mother, हैं। I am very fearful. So ये this वाली kind लीला of लिखी so many गई। he, Lord Krishna, वेदव्यास जी ने at कहा, his "हमने childhood गुरुजी ये तो नहीं pastime, लिखा।" he came to the अच्छा। Braj Gopal's house and जो he सखा है steals so कन्हैया many के, butters and उनके so नाम many सुनो। plates, so many श्री different राम, different सुबल, reasons. मधुमंगल, So many स्तोत्र sakhas are कृष्ण, ये there सब। in Vrindavan, Shrubal, Sridham, लवंग। Sobal, Stove Krishna. सखा कभी So कन्हैया को भगवान Sakha, मानते so हैं, those sakhas, they never जबकि ये accept कहते थे, Krishna अरे as a तू कौन सा god. बड़ा है, So they spoke to Krishna. हम तुम So, बराबर oh, के हैं। so who are so सखा शुद्ध how you सख्य can भावे करे स्कंदारोहण, so sakha शुद्ध भावे तुम्ही कौन बड़ा लोग, स्कंदे तुम्ही करे अभी तुम्ही सब। कौन बड़े लोग तुम्ही आम्ही सब. अरे तू कन्हैया कहाँ So का बड़ा है, oh कन्हैया, तेरे so पिता how के पास you 9 can लाख greater than गाय हैं, us. So हमारे you are पिता not के greater पास than 10-15 us. So your गाय हैं father बस, has 9 lakhs इससे तू बड़ा हो गया। cows, mother cows. So, चल so घोड़ा बन। our father has also 7 lakhs, कन्हैया 8 lakhs घोड़ा बन जाए cows. और सखा So उनके कंधे then पे चढ़ जाए, Lord चल जल्दी Krishna, चल। the sakhas asked Krishna to और oh कभी सखा please कुछ अच्छा सा sit माल like को a खाने horse हो, and we will sit तो on your कन्हैया back. उनके मुख से निकाल कर खा जाते हैं। Or then sometime Krishna still butter, समझ आया? he is eating और something, यदि कन्हैया then his कुछ अच्छा से sakha खा रहे हैं तो snatched सखा उनके मुंह from से his खा लेते mouth. हैं। झूठा खाएं और झूठा खिला दे, ये तो आज तक किसी अवतार में नहीं हो पाया, किसी अवतार में नहीं। So these pastimes, ये एकमात्र कृष्ण लीला में ही ऐसा सख्य भाव है, so जहाँ पर किसी प्रकार की औपचारिकता ही नहीं है, फॉर्मेलिटी है so ही नहीं। this kind of formalities is not in Vrindavan. So in क्या ये सब Vrindavan, लिखा? in Vrindavan it is always in अच्छा, the इससे mood भी of ऊपर Madhurya. So in वृंदावन की in गोपियाँ, Vrindavan, the gopis जिन्होंने of अपना Vrindavan, सर्वस्व so श्री कृष्ण को निछावर कर रखा who है, sacrifice everything for Krishna. और उन गोपियों में भी फिर And कौन, those gopis, श्री राधा amongst those जी, gopis, Srimati Radharani, जो कृष्ण की सेवा ही So- करती है सब समय। so she do ऐसे उन the राधा sevas जी for की Krishna श्री every कृष्ण की time. रास So- लीला को कहीं वर्णन किया। in Ras Leela, Srimati प्रिया Radhika, यदि she is the मान करे prominent. करे भरसन, So Krishna वेद explains, स्तुति Priya कहते yadi हरि मान मोर kare मन। करे versan best to the राधा जी hide कभी more रूठ man. जाए So if sometime तो कृष्ण उठक बैठक कर Srimati लेते हैं उनको Radharani मनाने के become लिए। angry, she did राधा man, जी रूठ जाए, and then she अच्छा so वृंदावन he कौन कौन गया angry. बताओ तो? So
So who came to who visit Vrindavan? So everyone visited अब ये बताओ Vrindavan. वृंदावन में सेवा So कुंज in कौन कौन Vrindavan, who visited, who had darshan of Seva Kunj, and now only less people have raised their फ्लैट hands. का नाम है So now they are thinking, what is Seva Kunj? So is there any flat there सब लोग which बांके name बिहारी is जी का Seva Kunj? दर्शन So करेगा। everyone has darshan of Banke Bihari. बांके बिहारी जी का दर्शन So किया everyone has फिर बाहर darshan of आकर Banke लस्सी Bihari. पीली, So after टिक्की having खाली, darshan of Banke Bihari, बोले वृंदावन so दर्शन they हो गया। take lassi, यही yogurt, तक ही तो and some 50 sweets. पेड़े खरीद लिए। And कभी भीतर वृंदावन में जाइए so वृंदावन में if sometimes 7 we मुख्य entered मंदिर in Vrindavan, so कितने 7 prominent इसको temples बोलते हैं are there. सप्तदेवालय। Saptadevalaya. 7 prominent temples बांके in बिहारी जी Vrindavan. तो बाद में So प्रकट हुए Banke Bihari बहुत ji, बाद so में। many years later, Banke Bihari उनसे पहले manifested. के So 7 before प्राचीन मंदिर हैं। Banke Bihari manifested, 7 other prominent temples जरूर manifested जाओ in ठाकुर जी का Vrindavan. दर्शन करो So लेकिन you ये should एक go. दिन में जो 7 मंदिरों का दर्शन करता है उसको वृंदावन का जाने का पूरा फल प्राप्त होता है। So if someone एक दिन में 7 मंदिर दर्शन करो। have darshan, और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बड़े आराम से हो जाते हैं, पास में ही है, 10-10 कदम so if someone is having darshan of those 7 temples in a day, then this is the very they got the very much mercy and they इतना सुंदर from भजन Krishna. पूरा फेमस होता है। One famous bhajan. So in that Madan कैसे है देखो Mohan ठाकुर ji, जी, Madan Mohan ji, यही भागवत जी है, यही नारद जी वेद व्यास जी को बता रहे हैं, आपने ये सब नहीं Narad लिखा, ji is इसलिए आपका asking मन Sri अशांत है। Vedvyaji that you have आप never सोचो, written कितने all, बड़े संत वेद all व्यास जी का about मन glories अशांत about है, all those pastimes वृंदावन की of बातों को Krishna. नहीं लिखा ना सुनाया। Krishna played in तो हम Vrindavan. कैसे जाने कि So, हमारा मन शांत हो जाए? so how you can be peaceful by your अशांति भी mind? रहेगी सारा So जीवन, if you are not क्योंकि glorifying इतने Krishna, निकट वृंदावन में है, Krishna शायद आंखों से तो दर्शन करते हैं, then कानों से you will नहीं be करते। obviously unsatisfied. So Vrindavan is very near to us. So if we want to go to दर्शन तो कानों Vrindavan, से ही होता है। then we should listen all those Harikatha about the बात समझ Swiss आई क्या कहना चाह pastimes रहा हूँ? of Krishna, because भाई कान पे कौन we से are लेंस not लगे? able to have darshan by ये जो कथा our सुन रहे हैं ना, material भागवत जी की eyes, कथा, but ये है भगवान का but दर्शन। if we have, but we अब 20 साल से listen. जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ना एक बात बोली भगवान ने, ना एक बात सुनी हमने। So अच्छा करते क्या है, क्या खाना पसंद है, so क्या अच्छा लगता है, So क्या अच्छा नहीं लगता, Krishna, कुछ what पता ही he नहीं। likes, what बस he गए भगवान wants, को प्रणाम so किया, टिक्की खा what ली। he wants from us. So we just visit थोड़ा दर्शन होता है। Vrindavan and we have eaten so many दर्शन sweet होता है, and सब yogurts, कानों and से। after that we move to our own जब सुनेंगे places. कि So उनको no क्या Harikatha अच्छा is लगता है, there. क्या अच्छा So नहीं if we listen Harikatha, through the उनका Harikatha स्वभाव क्या we है, can know what is the उनके nature गुण of क्या है, Krishna, what is the रूप कैसा qualities है। of Krishna, what is the beauty of Krishna. कोई बता दे तो भगवान का रूप कैसा है? So can anyone भागवत say जी में लिखा what is the नहीं पता form, होगा, what is the क्योंकि कथा beauty नहीं of सुनते। Krishna? No one can speak here because no one इसलिए is listening आंखों to से देखना होता Harikatha. है, So by material eyes we can see कानों से only, सुनने से and by दर्शन ear होता we है। can hear. If we hear the pastime आप by लोग our ears, then बड़े we बूढ़े can हैं, have the real अपने darshan. बच्चों का विवाह करने जाते हो, So here so many aged persons are there. So लड़की they को देखना, लड़के को देखना, they सुंदरी है कि नहीं, बस ये तक सीमित है, have engaged their ना आगे भी son. जानकारी लेते हो, So they कितनी पड़ी है, arranging marriage कैसी ceremony of है, their क्या children. स्वभाव है, So they आसपास when मोहल्ले में they इंक्वायरी होती arranging है, some marriage, होती so कि they नहीं? also inquire about the girls and boys, तो what the सिर्फ रूप से qualities तो of नहीं होता, देखने boys. से तो So नहीं they होता, are not observing only सुनने the से भी तो beauty, होता है। external beauty of the girl, एक साधारण external विवाह beauty में of भी the सुना जाता boy, है, but they हर also रिश्ता तय asking होता है। about the qualities और of the यहाँ तो boy or भगवान के girl. रिश्ते So के साथ, here, उनके साथ रिश्ता संबंध so जुड़ना, here in और Vrindavan, जोड़ना, if we want to connect with उसके लिए भी सुना Krishna, जाएगा कि नहीं so सुना that's जाएगा? why we should also know इसलिए so भागवत the जी की qualities कथा of का Krishna. पूरे So संसार that's में why होता है। this kathas is very दो चार परिवार very में necessary. एक तो ऐसे So many people, और जिससे सबका family, भला होता है, they arrange those kind of harikatha. सुनना पड़ता है, सुनने से ही होगा दर्शन। Very मदन मोहन जी important. देखो कैसे So Madan श्री Mohan ji, वृंदावन में
कभी जाओ तो मदन मोहन जी के मंदिर में जरूर जाओ। So, ये सब so तो नेपाल if में you है visit साथ। Vrindavan, so you must visit Madan तो Mohan मदन मोहन जी Mandir. का देखो, So Madan Mohan ji, एक बहुत बड़ा सेठ so a very rich person, a very जिनका नाम merchant, था कपूर, so whose surname was Kapoor. So he यहाँ से दिल्ली से so लाहौर जाता from था नमक Delhi, बेचने। so he was ये बात going बता to रहा हूँ, Lahore. कितने साल पुरानी, So many years back it happens. सैकड़ों So साल this पुरानी बात। merchant so many years गाँव ago, में जमुना जी so से जाता था वहाँ पर by नमक बेच कर the आता था। river by तो boat, एक दिन मदन so मोहन जी he ने was going to जो Lahore उनकी सेवा from करते Delhi. थे So उनका when नाम he था was going सनातन गोस्वामी। through क्या नाम था? Yamuna by boat, क्या नाम so बताया? that time one saint Sanatan Goswami, he was क्या करते doing हैं? उनको भोग कैसे seva लगाते to हैं Madan भगवान को? Mohan ji. So how he do seva to Madan Mohan आप ji? लोग जानते हो कि So बाटी all बाटी क्या people होती है know. जानते So हो? Bati. मारवाड़ी लोग So सब जानते हैं। Bati. So Marwari people knows. So Bati, आटा लेकर ऐसे ही it's सेककर हाथ में भगवान को ऐसे रखो। a round balls of wheat powder. So एक दिन and खाया, it दो is दिन खाया, it is तीन दिन खाया। it is roasted. So एक it दिन is ठाकुर जी baked कहने in लगे सनातन fire, अरे and थोड़ा सा after नमक that तो दे दे भाई। he offered Sanatan Goswami, he offered this bati so to Madan Mohan ji. Then one day Madan Mohan ji inquired to Sanatan Goswami, so you have always offered me this dry bati, this dry food item. So if so you can arrange a little salt for me. Then the Sanatan Goswami, he smiled and he asked, so today you are demanding for salt, so tomorrow you will demand for sweet and other things. So I am a saint, so I am doing my bhajan here, so how I can arrange all those things for you? So here this is not about salt. The matter is not about salt. Main thing is the love in between the Bhakta and Bhagwan. So many times Bhagavan, Lord, he examine his devotee, but so many times devotee also examine his Lord. So here Sanatan Goswami, he is examining Lord Madan Mohan. That's why he asked. So he was examining. So that's why he denied. Oh, I can't arrange salt. So that Madan Mohan ji, he replied, oh no way, no problem. So then Sanatan Goswami said, you can arrange by yourself. Then Thakurji, Madan Mohan ji, he arranged himself. This Kapoor, this merchant, who was going to Lahore by selling his salt in a boat. So that time he was going through Yamuna river. That time Yamuna was very wide, and that time his boat, it was stuck in the water. So that time he was shouting for help. Oh, someone please help me, please save me, save my salts, bagged salts from this water. And then Madan Mohan ji saved himself, saved the boat, saved the items. And then this merchant, he promised Krishna, Madan Mohan ji said, oh, I am going to selling this salt in Lahore. So after selling all those things, I will offer you the profit every. So that time Sanatan Goswami replied, so this is the matter in between you and your Thakurji. So he was such a renounced saint. So he don't have anything. So this merchant, so he has so much profit after selling those salt, bag of the salt, and after that with that money, so the profit of his business, so he made such a big temple in Madan Mandir, which we have. This temple is at Vrindavan. At present also the same temple is there in Vrindavan, Madan Mohan Mandir. We have darshan of this temple. So this. So sometime we asked some devotees, so oh, give some donations. We want a fan in our temple. So it fan 3
और एक में मेरे दादा का नाम, three दूसरे पंखड़ी में मेरी दादी का नाम, तीसरे में मेरा three नाम। petals are तो there. सबको दिखना तो चाहिए। So they wrote the names of his ancestors, so of his इसको दान forefathers. बोलते हैं, So they wrote their name on the fan. इसको इनाम So बोलते हैं। so is this called donation? No. हमने क्या So दिया, what उसके I have बदले में given तो to भगवान से Lord. कुछ वापस मांग लिया। So I have तो वो written, चीज आपके explain. पास So रही नहीं। if I have जितने explained, लोगों ने देखी so और उसके लिए if ताली बजा दी ना, if आपकी पेमेंट वहीं I वहीं if सारी। I मेरी बात समझ में informed आई? everyone by समझ writing आई? those names, so which I have donated in मंदिर में temple. मैंने 2 So ईंट दान दी, so this is not तो महाराज good. जी हमारा नाम वहाँ So पर लिखा suppose I जी। have given a wall, आते donated a जाते wall लोग देखे to तो the सही। mandir. So then I हमने have कुछ asked, किया, oh Maharaj, इसको I दान have नहीं कहा जाता। gave donate this दान के wall. So संबंध में please कहा जाता है कि एक हाथ mention में my तो name दूसरे in हाथ that को भी wall. पता लगे। So this is सुना not नहीं कहावत? donation. So when you have given donation जब by one ऐसा hand, किसी का then the साहस other होगा ना, hand should not be तब informed. ही So this is called dan. भगवान So this is very आपके silently ऊपर you can दृष्टि डालेंगे और you नजर should पड़ेगी। donate तब something to temple or devotees. क्योंकि So आपने भगवान के लिए किया है। so if you are और यदि doing समाज को something दिखलाने के लिए करेंगे तो for समाज को Krishna, ताली so बजानी। you should not show आपका off नाम हो गया, all those प्रसिद्धि हो गई, things. आपकी So पेमेंट if हो गई you are सारी साथ। भाई so काम कर रहे making हैं show आप, off, पेमेंट हो then गई। people will clapping and people will give और अगर you पेमेंट ना fame. लो, So उनके पास ही जमा रखो, नहीं रखो अपने पास। but we should not तो वो जो want बढ़ता जाएगा, those बढ़ता kind जाएगा, of बढ़ता fame. जाएगा, आपका नाम तो So अपने आप ही बढ़ेगा। we should not बताने की जरूरत नहीं desire पड़ेगी। for such भगवान kind किसी of की fame. सेवा को छिपा So के नहीं रखते। Lord आज Krishna, नहीं तो He कल never वो hides प्रकाशित our करेगा। services. So if we do our services by our heart, इसलिए then बचो Krishna इस चीज will से। always expose these things to his कपूर devotees. गिने, So this Kapoor, इतना धन the लगाकर, merchant, so इतना he बड़ा मंदिर है, वो he जाकर spent देखना so चाहिए। much money in the temple. उन्होंने Sri एक Radha ही बात Madan कही, Mohan Ji. That time he prayed मेरा one नाम thing to कहीं ना Krishna. आए। So I should, so Krishna, मेरी जब मैं मर I जाऊंगा, never mention my name, मेरी एक so छोटी सी that I पत्थर have की इतनी एक I have उंगली made this एक such a पत्थर big की एक temple. मेरी मूर्ति बनाकर So he वहाँ only पर लगा desired दे। कहाँ पे that लगा when था ना? I ये ध्यान से die, सुनो। when I die, जहाँ ठाकुर then जी का अभिषेक होता है, then when I पुराने मंदिर die, है ना, ये तो 500 so साल, so 1000 साल make पुराने a मंदिर। make a statue of my तो उस समय जैसे make a मंदिर statue बनते थे, statue. जहाँ भगवान का So अभिषेक make my होता है, वहाँ से statue, नाला निकलता है, बाहर and जो then पानी आ so जाता है। when so and तो where जहाँ do you पर have वो to नाला put the बाहर आए, statue? So when in वहाँ पर Vrindavan, जहाँ so होती so है, this is the वहाँ very पर old ancient मेरी temple of छोटी सी Vrindavan. उंगली जितनी एक मूर्ति So लगा देना। so where when the Abhishek was done, Abhishek is और done जब जब of रोज Krishna, भगवान का then अभिषेक Lord होगा, Krishna's Abhishek मेरे done, मस्तक पर उनका and then in चरणामृत that place you should बस मैं यही put मांगता my statue that Abhishek Charnamrit will इतना धन flow लगाया, through वो my मंदिर जाकर head. देखना, कभी उस समय की So बात है, कितना so it पैसा was a लगा very था। old temple of Vrindavan. तो So वो this चाहते थे उस समय merchant, लोकल लोगों so को बोल सकते that थे, time नाम he की can पट्टी लगा he दो। can ask those people who उन्होंने वो the स्वीकार carpenter नहीं किया। that oh mention my name in the भगवान temple. का चरणामृत So but रोज he मेरे मस्तक never पर आएगा, he ये never स्वीकार accept this. But what he accept है। the देखो मैंने तो the बात खोल कर बोल दी। Charnamrit of Lord हजारों Krishna's लोग मदन मोहन जी Abhishek. के मंदिर में जाते हैं, So उनको पता ही नहीं thousands होगा and thousands people visited Madan क्यों? Mohan नाम temple, नहीं है ना, but they don't know these things what I have नाम spoke. नहीं काम है बस। So because he never mentioned all those things, इसलिए नाम की चिंता so मत करो, काम की so चिंता that's करो। why we should think about our fame. We should always think हनुमान जी ने कभी how नाम much से service. कमाया? By sincere service, Krishna अरे is मैं happy. संजीवनी लेकर So आया, Hanuman ji, when और he मैं नहीं brought होता तो कौन Sanjeevani, लाता? so did he ask, लक्ष्मण oh को I चले have जाते? brought Sanjeevani अगर boti. रात रात को मैं So संजीवनी नहीं लाता। so did he demand? So अरे did मैं he claim that oh I fly in the sky and I say and she is, I fly to the Sri Lanka, the to Sita Mata. So did he asked someone? Did he spoke all those things to someone? No. तब तो आपकी So सेवा so फलीभूत this होगी। is seva. So this is seva. If we are doing some seva, then we should never mention about our seva to others. आपके सामने आ जाएगी। So this is we should be very careful about this. अरे घर में 10 लाख So रुपए इमरजेंसी के लिए रखा
So if someone is, say someone is stored 10 lakhs rupees at his home for any emergency, so sometime maybe some for medical purpose, so maybe something, so he so he if he make expenses from the savings money, then he will not able to do his medical treatment at that time. He saved all those money for emergency, for any health problems and other things. So that's why our all services, it is also stored. So we should also store all this. If we expenses do expenses, then this seva will be finished. So काम मतलब here काम works activities means seva. So our Guruji is speaking one about Man temple, only one temple above Vrindavan. So Madan Mohan Govind Gopinath ji, Shri Radha Raman ji, Shri Radha Gokulananda ji, Radha Damodar ji, Radha Shyam Sundar ji. Those seven is the seven prominent temple of Vrindavan. So those are also manifested before Bhakti. So if a person he visited this seven temple in one day, so then he should have the benefit of whole Vrindavan darshan. So this is the darshan of whole Vrindavan. So you should do the darshan of Banke Bihari also. But so if you are doing only darshan of Banke Bihari, you have not visited all those seven temples, then your darshan is not complete. So in the Bhagavad Katha, if Guruji is explaining about one temple every day, so then those 7 days Harikatha will be completed with this 7 temple. So now he is explaining about the Sri Radha Ramanji temple. So one small deity called Sri Radha Raman. So I think everyone is visited in the temple. So how he manifested, how many people knows? Please raise their hand who knows about Radha Raman. So these 8 people. So those who were also visited with me in Vrindavan. So how he manifested, how Radha Ramanji, so many people, they never visited Radha Ramanji temple. So next time when you go to Vrindavan, so visit this Radha Raman temple. So this Radha Ramanji is manifested from the Shaligram Shila. So a very great saint, Gopal Bhatt Goswami, Sri Gopal Bhatt Goswami, Sri Gopal Bhatt Goswami, Sri Gopal Bhatt Goswami. So when we pronounce this great saint's name, then we can become pure. So this saint, Sri Gopal Bhatt Goswami, so he do seva of his Shaligram. So one day another saint, merchant, he donated so many things, items, so many mukuts, dress to the different temples of Vrindavan. So the saint, this merchant also came to Sri Gopal Bhatt Goswami. So this is the mukut, this is the dress, this is the nukur, necklace, everything for Thakurji. Then Sri Gopal Bhatt Goswami, he was thinking that, oh, I don't have any deity, I have only this round Shaligram Shila. So that time Gopal Bhatt Goswami was crying. So if I have any deity, then I can decorate my deity with this ornaments and dresses. When he cries, his tears fall down in the Shaligram Shila, and from the tears, so the Lord Krishna, he happy and he manifested from the Shaligram Shila. So then Vedvyaji, so Naradji was asking to Vedvyaji, so did you explain all the sweet pastimes of Krishna? So that's why you are unsatisfied, that's why you are unhappy. So now for happiness we are going to listen a nice bhajan. Vrindavan Bihari Lal Ki Jai.
श्री राधा जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, और जय जय माखन श्री राधा की वृंदावन धाम की जय। हो राधा रमण लगे प्राणों से भी प्यारे, ध्यान से शब्द कीजिएगा, बड़े प्यारे दिखते हैं और कैसे हैं? भक्तों के प्राण जीव बेसहारों के सहारे, श्री राधा लगे प्राणों से भी प्यारे, राधा रमण हमारे, श्री राधा रमण हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे, राधा रमण हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे, भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन, बेसहारों के सहारे, राधा रमण हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे, राधा रमण हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे, भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन, श्री राधा भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन, बेसहारों के सहारे, राधा रमण हमारे, लगे प्राण से भी प्यारे, राधा लगे प्राण से भी राधा
रूप मनोहर जैसे जब ये समझ आएगा मेरे जाना कभी राजनावत जी कह रहे हैं भक्त हो ऐसा रूप मनोहर जैसे सरोवर रूप मनोहर जैसे कोई इंतजारी हर एक अदा निराली जैसे कोई इंतजारी हंस हंस के चैन लूटे हंस के चैन लूटे हंस हंस के चैन लूटे हंस के चैन लूटे
और भैया सब इनको देख रहे हैं, भगवान की तरफ तो कोई देख नहीं रहा। बैठ के कम से कम मुझसे भगवान का नाम तो कर लो। हमारे पहले आगे में बोलते हैं भैया फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी यहाँ पर, इनके सामने फॉर्मेलिटी वाले नहीं। सब जानते कौन किस भाव से बैठा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रेम की भूखे हैं के साथ नृत्य नहीं कर सकते तो दोनों हाथ आप भुजाओं को उठा के श्री राधा रामन जी का स्मरण करते बोलिए। और ठाकुर से जिसकी लड़ाई लग गई फिर उसको सुध-बुध नहीं रहती संविधान की, क्या बोले, लगन तुमसे लगा अभी भी लगन लगी रही है। हाथ आगे श्री राधा रानी की लगन तुमसे लगा बैठे जो तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना छुप छुप याद करते हैं, कभी याद करते हैं, कि छुप छुप याद करते हैं, कि छुप छुप याद करते हैं, कि छुप छुप याद करते हैं। कन्हैया को बोल लो और हाथ आगे भुजाओं बढ़ा के दिल को खोल के हे राधा है कन्हैया राधा रमना लो अब परदा
चुपचाप बैठे हैं ना भैया, आप भी बोल दो। अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोल दो। हमारे कृष्ण तो इतने करुणामय हैं, कोई मान लेंगे, बड़े कृपालु हैं। इधर उधर मत देखो, ये सुबह के बाबा नहीं तो हाथ आगे जय जय राम मेरो राम, जय जय ठाकुर जी को अपना कह के आज बोल दो कि आपके अलावा कोई बताने वाला नहीं है। प्रभु हमें संसार में कहीं भी, यहाँ भी वहाँ भी आप ही हो। कौन? मेरा कोई ना, मेरा कोई ना।
जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भजन संध्या की। श्री वेद व्यास जी नारद जी से बहुत सारी शिक्षा ले रहे हैं। नारद जी ने कहा आपको वृंदावन की ये जो मधुर मधुर श्री कृष्ण की रास वेद व्यास जी आज गुरु जी से Narad ji said that with Vyas ji, you haven't discussed Narad ji anything ने about Vrindavan अब आप Leela. समाधि में दर्शन करो। वेद व्यास जी ने कहा गुरु जी ये भजन की रीति क्या है? Ved Vyas ji said, what is the process of doing bhajan? How to follow this Bhagavad Dharma? Please tell me something about this. तो नारद जी ने अपने जीवन की गाथा से सुनाई। Narad ji then narrated his own life history. नारद जी ने कहा देखो वेद व्यास जी Narad ji said, O Ved Vyas, in my previous life, दासी Narad ji is saying that O Ved Vyas, in my previous life, I was a son of a maid servant. काम काज करती My mother used to do the household works of every other people in the village. She used to do sweeping and cleaning utensils, etc. Household works of other people. नारद जी कह रहे हैं देखो Narad ji is saying, मेरे पिछले जन्म में in my previous birth, मैं एक दासी का पुत्र I was the son of a maid, जाकर काम करती थी and my mother used to लेकिन nourish me by doing household works of other people. चातुर्मास्य का जो समय होता है But once upon a time, there was a time of Chaturmasya, कुछ श्रेणी के संत and at the time of Chaturmasya, some great sages and some great saints come to our village, और जहाँ पर संत आ जाए and वहाँ पर तो they have Katha already starts there. नारद जी कह रहे हैं, मेरी माता Narad ने ji said that ये विचार my किया कि संतों की सेवा में mother thought that if my son will be engaged in the services of these saints, then there will be no lacunas of anything in our और life. एक दिन Then Narad ji used to मैंने उनकी give आज्ञा से, prasad उनकी to परमिशन से those sages. एक बात कही उच्छिष्ट लेपन अनुमोदित द्विजा। हे भक्तों आपने जो खा लिया है वो Narad थोड़ा सा ji बच गया है said to those sages that all sages, if you desire, if you give your mercy upon me, can I take your taste from your leftover prasadam? Narad ji asked जब permission from those sages to get their uchist. शक्ति का संचालन हो He said, when we take permission before anything, then के बाद खा लो। and when Narad ji took permission from those sages to take their uchist, those sages allowed, and when Narad ji took the uchist of their leftover prasad, they bhakti automatically took birth in his heart. सारी प्रतीक्षा दूर हो गई। His lifelong wait was over. पुराने जितने भी All of his past sanskars got shuddh, got pure, और मेरे हृदय में भक्ति उतरा। and in his heart
Bhakti arrived, Bhakti took birth. Naraji said that after 4 months of Chaturmasya, he received 2 types of prasadam from those sages. First one is the leftover prasad from their plates, and second one is the prasad from their mouths, means their Harikatha. वह भक्ति मेरे हृदय में उतर आई। And by doing that, pure bhakti took birth in my heart. और इससे क्या हुआ? And what happened after this? When those sons were leaving the village, Naraji did Dandvat and said, "Oh sages, you are going, but before going, give me some mantra that by which I can attain God." This thing was not in the mind of Naraji before, but why did it came now? It is because he tasted the uchist of those sages. रास्ता भी हो तो शॉर्टकट पता हो, It भोजन is, भी हो तो शॉर्टकट हो जाए। you know, it is the time of shortcuts. Everyone wants to take shortcuts in everything. पहले कथा होती थी 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम। First, earlier, before 20 years ago, earlier it was like that. 3 घंटा संध्या को। In Bhagavad, there were 2 times katha, 3 hours in the morning and 3 hours in the afternoon. 6 से 9 3 घंटे की But कथा। nowadays, only 3 hours in a संगत कुछ तो आ total जाती 3 है, hours in a कुछ day, and still people arrive late. अलग अलग कारणों से इसमें भी भजन भक्ति भी चलती है। In those 3 hours, kirtans and bhajan also happens, पहले क्या पड़ता है? and 1 घंटा कथा। so in end result only 1.5 hour katha is only heard by all the listeners. तो भक्ति का भी शॉर्टकट है। So just like that, bhakti also has a shortcut. What is the shortcut of bhakti? It's bhakt pad doli, bhakt pad jal, bhakt mukh shesh, 3 sadhane bal. भक्ति का भी एक शॉर्टकट है। The देखो, shortcut of bhakti, भक्तों का झूठा प्रसाद, shortcut of bhakti is the leftover prasadam of devotees, the charnamrit of devotees, और भक्तों के चरण धूल। and the dust of the lotus feet of एक भी प्राप्त devotees. If anyone gets one among these 3 things, they will get pure bhakti automatically. Here, we are not discussing about चरणामृत Lord's dust of Lord's lotus feet or the leftover prasadam by Lord. No, we are discussing about the leftover prasadam of devotees. पूरे सरेलू आंध्र की। मैं अपने भक्त Krishna himself is saying that I run behind my devotees. Krishna says that I carry the dust of my devotees on my forehead. चलता है और उसकी चरण धूल वस्त्र पर धारण करता है। ध्यान से सुन रहे हो? Listen carefully. ऐसा नहीं है। It is not like that devotee is running behind the Lord, but it is like that Lord runs behind his devotees and carries their dust on his forehead. उनको ऐसे क्या जरूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई? What is the need for Lord to do all these things? मेरे भक्त मेरी बहुत सेवा It करते is because Lord says that my devotees always do so much services for me. When I ask them what they want, they do not demand anything from me. So that's why I come to their heart. I come to the heart of my devotees and rests there. All these material peoples, what they do, they always keep complaining me and demanding me anything. My rooftop is leaking. Today is very cold day. Today my gas is not working. This small thing, people disturbs me. Oh Krishna, I can do your Bhagavad Katha and my slippers got stolen. Does Krishna is sitting for doing
doing all these such things? इसके लिए भगवान नहीं बैठे, No, Krishna is not. भगवान जी है। और विश्वास कर If you truly believe Krishna is प्रेम करो, deity उनसे प्रेम लो, to receive prayer. तो देखना एक खुदाई If we love Krishna without in return, and automatically all the wealth and all the happiness will come to our house. और पत्नी की जाति के रहती नहीं। It is a common problem that everyone wants only लक्ष्मी जी Lakshmi, आप not Lakshmipati, लेकिन But- आपके पति आएंगे तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा, because they say of you only Lakshmi. भी नहीं। और जब And आप ही we जाती don't से दो want चार to serve Lakshmipati. That's why Lakshmi do not come into the house of peoples. Lakshmi means wealth, money. एक लक्ष्मी जी There are two types of Lakshmi. जी। One is Lakshmi and another is Mahalakshmi. समुद्र से देखती हो चंचल लक्ष्मी, Lakshmi that appeared from the ocean is Chandra Lakshmi. Her Vahan is owl. ज्यादा दिन टिकती नहीं, She will not stay लेकिन for स्वभाव long ही क्या चंचल है। at anyone's home because her Swabhav is chanchal, means लेकिन महालक्ष्मी जी mischievous. जो सब समय श्री But नारायण के साथ the विराजमान second one, Mahalakshmi, who is always studying Shri Narayan, आप घर में नारायण की worship Narayan Ram, दौड़ी दौड़ी स्वामी आएगी। then और लक्ष्मी का we मतलब will सिर्फ not धन have to प्राप्ति नहीं call होता। Lakshmi. देखती Automatically है, arrives. पत्नी को बोलता है, Lakshmi doesn't only means wealth, it means wealth, बेचारा peace. इतने बड़े बेडरूम में रहता है, 2 करोड़ का बेडरूम, A person is so much rich that he lives in a big bungalow of 2 crore, 56 भूत तो भूख खा से but he doesn't have a good health and he cannot sleep peacefully. He takes medicine to get sleep. So, तो भगवान Mahalakshmi, तो के पीछे पड़ते हैं, ये ध्यान से समझना। Krishna मैं चाहता हूँ runs behind his devotees because he wants to give his devotees everything, but devotees just asking in return. What does the real devotees ask? Devotees ask that, oh Lord, फिर हम सोचते हैं we only want to your bhakti, is जो your bhakti. आपकी बात सुन हर दूसरे दिन एक डिमांड आ जाती है, But these real people are keeps always demanding. नौकर को कहा जाता है बार बार, Krishna is not our servant, he is our owner. हिम्मत होगी बोलने की, We cannot demand anything from our नौकर को owner. आदेश दिया जाता है। इसलिए We people gives order to their servants, not to their owners. So that's why we have to always भगवान का नाम करता है, we are servant of Lord. प्रार्थना भगवान So we have to always request. जो मतलब ही नहीं है, जो मतलब पर ही भगवान के मंदिर में आ गया। हर रोज जो भगवान का नाम करते हैं, Persons who chants every day the holy names of Lord and keeps fasting on Ekadashi, their wishes are fulfilled by Krishna. मतलब ना निकालकर That's why भजन we should do bhajan, we should do kirtan of जब वो संत Krishna जा रहे without any God. So that's what Naraji asked to those sages that what sages you are leaving, please give me some mantra so that I can attain bhakti. So those sages mantras to Naraji. Naraji is telling all this story of his past life to Ved Vyas ji. अब शिष्य वेदव्यास जी मुंह देखते बोलते गुरु जी आगे तो बताओ। Now Ved Vyas ji said, oh Guru, Dev, please tell me इसके आगे तो what गोपन happened बातें होती further. हैं। Naraji यहाँ said तक that तो no, बताया जाता I है कि will मैं not कैसे tell भक्ति में further आया, because कैसे गुरु जी मिले, from that कैसे नाम मिला, on कैसे everything भक्ति is मिला। open, I mean secret. I can tell you how I met my Guru Vargas and how I received mantra from them.
रखा, this should be kept secret. लेकिन वेद व्यास जी ने फिर प्रार्थना की, But Ved Vyas again requested Guru ji, that, O Gurudev, O Narad Muni, please tell me what अब happened उनको after सत that. शिष्य जानकर Now Narad ji knew that Ved Vyas is a very ये good पानी का disciple, बीच a true disciple. ये समस्या है, अपनी कथा को स्वयं ही बेकार करते हो। Please do not cause any disturbances in between the Harikatha. पहले बांट लो फिर बताऊंगा। ये भागवत की कथा थी ना, पानी के चक्कर में ही हुई। People here are distributing waters in between the Harikatha, and this Bhagavad माता also बिल्कुल नाराज हो happened जाएगी। due to the water. भागवत की कथा पानी के चक्कर में ही तो सब कुछ हुआ। This Parikshit ji Bhagavad only happened due to water. Why? Parikshit Shamak Maharaj Rishi ji क्या felt बताएं? thirsty. He went वो तो to जल पिलाओ। Shramik और शमक Rishi, ऋषि तो ध्यान में and बैठे, Shramik बहुत Rishi ही। was in his sadhana. तो And परीक्षित जी ने बाण की So नोक से Parikshit बना हुआ ji सांप ऋषि के took गले में a डाल dead दिया। snake with his arrow and put it on the neck of Shramik Rishi, and इसलिए सर्पों का his राजा son तक्षक आके आपको cursed डसेगा, him सात that, दिन oh में Parikshit मृत्यु हो Maharaj, जाएगी। you did this sinful activity, and ये Takshak snake will kill you after 7 days. And मैं खाऊंगा, मैं why पीऊंगा। not? Parikshit ji asked अगर प्यास में Shri पानी Shukdev पीओगे तो Goswami पागल to नहीं narrated Bhagavad Katha to him. So that's why this Bhagavad started by this water thing. पानी के कारण कथा हो, लेकिन कथा में पानी मत डालो। कल से अपने अपने घर से बोतलें लेके आना। कथा में ध्यान, 7 से 9 बजे 2 घंटा मांग लो बस आपसे। Everyone please listen to Harikatha carefully, at least for 2 hours. शिकंजी You पियो, have full day to नींबू पानी do पियो, anything. मैंगो शेक पियो, बनाना शेक पियो, You शेक can में शेक हो जाओ। do anything at your home, drink anything, eat anything, but please listen to शेक पीते पीते attentively. स्वयं शेक हो जाओ, लेकिन 2 घंटा मुझको आराम से दे दो बस अपने। For 2 hours, please जो listen आप मुझको दे रहे हो attentively. ना, बहुत बड़ा दान दे रहे हो, जानते हो? You are giving me a great आप donation. कहेंगे नहीं जी, मैंने तो 20 रुपए You चढ़ाए थे। know what a अरे वो दान नहीं, great donation you are giving me. आप जितनी माताएं जितने बड़े भैया बैठे हैं, All these Matajis and आप Prabhujis अपने who are प्राणों sitting का दान मुझको दे रहे here, हो, you are giving मुझ पर me बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो। the donation of your मेरी बात सुन लो ears ध्यान से। by listening this Harikatha. आप लोग सब मुझ पर उपकार कर रहे हो, एहसान कर रहे हो, You all are doing a great favor on me. How? जिससे By मैं giving अपने मुंह से your कुछ 2 कथा ears सुनाऊं to me और आपके कानों by में listening सुनाऊं। this Harikatha. मुझको भगवान की सेवा का अवसर दे रहे हो आप लोग। You are giving me the opportunity to इसलिए do आप बड़े service भक्ति हो, मैं आप सबको प्रणाम for करता हूं। Lord by narrating this Harikatha. लेकिन जहाँ गड़बड़ देखेगी तो फिर मैं टीचर भी हूँ But also, I am also a teacher. I will not tolerate any disturbances. और प्रेम भी करूंगा, दोनों एक I साथ। will also show love and affection, but I will also scold if any क्या बोल रहा था मैं, disturbance याद है? comes. Anyone remembers what I was क्या saying? बोल रहा था? Tell me. देखा, भूल गए ना बहुत सारे लोग। 2-4 माता Many people forgot what I was saying. ध्यान से सुनते नहीं। So listen carefully. नारद जी कहते हैं, Narad ji is saying, मैंने उनसे मंत्र प्राप्त किया, I took mantra from those लेकिन great उसके आगे की sages, घटना छुपा दी। but after that I will not tell अपना जो anything. बीज भजन होता है, Narad ये ji छुपाने की चीज नहीं, ये छुपाने की चीज होती है। hide his bhajan लेकिन sadhana संत शिष्य process, वेद व्यास जी को but अपना संत शिष्य Narad ji realized that Ved Vyas is a true and honest disciple, ओके सुनो, so he told about everything. Narad ji said that after receiving the mantras from those sages, the sages left my village, and I, after receiving the मैंने mantras सबसे from पहले them, विचार किया, I मेरे सारे first संसार of में all मेरी told आसक्ति that है, वो मेरी माता की है। my हे भगवान, asakti, my ये एक आसक्ति क्यों रखी हुई है? attachment.
My attachment, the जब ऐसी topmost स्थिति आती है attachment in this world is with my तो mother. किसी प्रकार की आसक्ति उससे चाहता नहीं। So Naraji said that my topmost attachment in this Naraji material world was मंत्र with प्राप्त my करके mother, वन में and चले गए। it was कहते हैं causing मैं so जंगल में much गया, disturbances into नदियों को bhajan. पार किया, So Naraji went पर्वतों into को पार jungles, crossing और एक rivers, वृक्ष के crossing नीचे mountains, बैठकर and he found a जैसी मैंने tree and उच्चारण आरंभ किया, sitting below the हाँ, tree and मंत्र starting उच्चारण chanting क्या that किया, mantra. साक्षात श्री हरि सामने आ गए। And when I started chanting बोलो the भक्तवत्सल mantra, भगवान Sri Hari appeared there in front of me. भगवान सामने आ गए। नारद जी कह रहे मैंने दर्शन किया, Naraji said that I took darshan of Sri Hari at that moment from his lotus feet to his forehead. Everything had so much shringar, कान में कुंडल, चरणों में नुपुर, earrings कमर in में इतने ears. ऐसे सुंदर मैंने दर्शन किया, लेकिन वो दर्शन कुछ ही क्षणों में ओझल हो गया। But that darshan of Sri Hari नारद जी कहते हैं, मैं disappeared विवल हो गया। अरे in a little bit कहाँ of गया, time. कहाँ गया वो I दर्शन, got कहाँ so गया? much प्रभु, आप कहाँ गए? fumbled. I got so much time. तो Where कोई did Sri भागता Hari है, disappear? Where did Sri Hari 10 disappeared? करोड़ की लॉटरी निकल जाए It is just like that. और व्यक्ति कितना Over a प्रसन्न night, हो, a person सुबह gets जब a 10 crore lottery, and in the morning he gets his 10 crore got stolen. ठीक था, लेकिन आने के But बाद चला जाए, that person will feel so much sad. नारद जी कह रहे मेरे को वो संपत्ति प्राप्त So हुई, just like that, Naraji saying that I got that lottery, I got that so much great wealth of darshans of Sri Hari, but when he disappeared within seconds, I became so much sad and tensed. And then a sound from sky came. अभिपक्व शयनम दुर्दोषम को योगी नो। The sound from जिनका sky योग, said जिनकी that, भक्ति पूरी नहीं O होती, Narad, whose उनको मेरा yoga दर्शन and कभी whose प्राप्त नहीं bhakti होता। is not completed cannot क्योंकि have my आपकी भक्ति darshans. पूरी हो गई थी, But as आपको your मेरा दर्शन प्राप्त bhakti हो गया। was completed लेकिन and you got my darshan, but आपकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए to increase your desire, to increase your ये भी बात समझो, uh, जानबूझकर bhakti, भगवान सामने I आने के लिए disappeared so that you will be more enthusiastic, more you will desire more. You उत्कंठा, to take darshan, इसको to take my बढ़ाने darshan. You will do more thing, more and more जितना भक्त तो चिंतन करेगा, have my darshan again. उसका प्रेम बढ़ेगा। हिसाब लगा लो, You can सुबह का कुछ ना खाए, calculate शाम को yourself भूख लग that जाए, if you have not eaten anything from उस समय morning व्यक्ति छटपट to करता है, एक evening, दिन में भोजन नहीं मिला, you अगले will दिन feel so much भोजन नहीं hungry. मिला, You will तीसरे feel दिन क्या so होगा? much hungry if you don't get food for one day and another second day and a third day. For 3 days you do not get any food. You will be so much hungry and you will accept anything that comes in front of you. ये नहीं बता सकती थी। Take me, give me, I will eat anything. But when your stomach is full, you will be choosy. No, I will not eat this. I will love to have that food item. But when we are hungry, भूख को बढ़ाने के we लिए all can take anything. We will eat anything. So to increase this hunger of a devotee, और यदि आ Bhagwan जाए intentionally don't come in front of us so that we will desire more and more about the darshans of भगवान Lord. ने कह दिया नारद, In that Akashvani, the sound from the sky, it said that, O Narad, do more tapasya, and when your body will be shed, ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, you will have to enter और ब्रह्मा जी चले जाएंगे into विष्णु जी the के शरीर में, body of Brahma ji, and Brahma ji will तो श्री विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म होगा, and Brahma ji will be added, will went into the body of Vishnu, and तू दासी पुत्र नहीं, तू then मेरे just like पार्षद, that you will take birth, not like as a son of a maid, but as a Narad Muni. और नारद जी तो अब And after listening this, मंत्र का जाप करने लगे, Narad Muni was so much enthusiastic that he started to chant that mantra again and again, and he was so enthusiastic and desiring
that when will my birth will be over, when will my life will be over. So in next birth I will take birth as a devotee of Sri Hari. But on the other hand, we are always thinking that my life will not end. I want to live a longer. But Naraji is praying that when will my life be over? Because why is he doing that? Because Lord gave him the assurance that in your next birth you will be my great devotee. That's why he is desiring more and more. कौन छोड़ा 3 सेक्टर? On the other hand, if भगवान कहेंगे भाई तेरे को Krishna वैकुंठ ले gave जाना us था, assurance that, oh, नहीं प्रभु, Jeev, 3 सेक्टर come सबसे सुंदर है। and I will take you to Vaikuntha. But है भी। our materialistic nature is just like that. जाना We नहीं will not चाहते। leave क्यों? this मरना our नहीं चाहता house तू। और because we भगवान do not आपके want पास to रहकर करना die. क्या है? We will मेरी say, सुंदर पत्नी मेरे what साथ will I रहेगी? do to live with you? अच्छा, What ये will बच्चे I मेरे do साथ by रहेंगे? living with you, Krishna? अच्छा, ये My काम wife करता will रहेगा? not be there, मेरे my को business इनसे will not शक्ति be की छोड़ने there, का मन नहीं my करता। children will not be there. I am so much attached to them, so I will इसलिए not go to एक बार Vaikuntha. नारद जी आए, This is the condition of us एक व्यक्ति जो materialistic काम धंधे में peoples. बड़ा बिजी रहता था That's why और once बड़े upon a परिश्रम time, करके उसने Narad पैसा ji कमाया। came उसका near नाम to था a कैलाश। अरे भाई किसी का है तो नहीं। person who was so rich, named Kailash. The name of that person is Kailash. Narad ji said, "Oh एक बार तेरे Kailash, को ही होना है, ये तेरे को पता है? one day you will die for sure." Kailash replied, "Yes, I know." तेरे को मैं अभी के अभी वैकुंठ ले जा सकता हूँ, Narad ji चलेगा? said that, "Oh Kailash, I will take you to Vaikuntha just right now. If you want, do you want to go?" Kailash replied that, "No, और तू रहेगा I do नहीं not रहेगा want तो to तेरे go. कारण My बहुत childs तकलीफ are होगी। so small." बोलता नहीं है। Narad ji said बच्चों को that बड़ा होने दो, पढ़ाई if you लिखाई live here, कराऊंगा, your काम childs करना will शुरू grow. करूंगा, तब Even if सोचूंगा। you are not here, your childs will समय grow. बीता, So नारद जी go फिर to से आ गए। Vaikuntha with me. कैलाश, Kailash said, "No, no. After my childs grow up, I will चलेगा go to वैकुंठ मेरे Vaikuntha." साथ? Then Narad ji came after so many तो years नारद and जी, said, अभी "Now अभी you are, अपने oh काम Kailash, शुरू you करो। are childs are now grown up adults. Now you come with me to सुख तो भोग Vaikuntha." ले दो, सारा So जीवन Kailash मेहनत replied करो, that, थोड़े सुख "No, ले दो। Narad ji, my बोलते, childs बेटा have ये just सुख started सुख नहीं their है, business. सुख वैकुंठ में They have मिलेगा, just भगवान started के चरणों पे earnings. निकल रहेगा। Let me enjoy their happiness. Let me enjoy अभी some नहीं, थोड़ा रुक जाओ। wealth." ठीक है, तेरे जो राजी Narad ji said that, "Okay, फिर थोड़े as you समय wish, के if you बाद do not नारद जी want आए, to go to कैलाश, Vaikuntha now." ये Narad भी ji, बातें after सोच रहे, so फिर आ गए। many years, again came and said, हाँ हाँ, आइए आइए, "Oh Kailash, ऊपर से तो आई होइए, Now- अंदर से क्या? Lord, फिर क्यों आ गए? come to Vaikuntha with me." Now Kailash in his mind is thinking that why did this Narad ji again and again coming? And he बोलते, अब क्या? automatically replied that, "No, I do not want to go to Vaikuntha now because the business is running so good. My childs are earning so much. My kids have also did so much investments and they are doing so great in their business." Narad ji replied that, "Oh Kailash, you were saying that when your kids will grow up, you will go to Vaikuntha. Then you said when their business will be settled, you will go to Vaikuntha. But now you are again making an excuse to not go to Vaikuntha." समय बीता, बच्चों का विवाह हो गया, आगे बच्चे हो गए। नारद जी फिर आ गए, And कैलाश, after so many years, Narad ji again came. The childs of Kailash were married and they have they have children also. And Narad ji said, "Come to Vaikuntha with me." Kailash replied, "No, no, no, Narad ji, I do not want to go to Vaikuntha now. I want to play with my grandkids. I like them so much. My grandkids are so little and cute. I want to play with them. I don't want to go to Vaikuntha now. 6 महीने पक्का आपके साथ After 6 months, I will surely go to Vaikuntha with you. Please give me 6 months time." Narad ji said, "Okay, I will come again after 6 months." After 6 months, Narad ji again came, कैलाश तो था नहीं, and there Kailash was not present. Only his photo was there, माला लटकी हुई। and there was a garland on that photo. बच्चे आए, हाथ जोड़ा, His children came near Narad ji and said, "Pranam." Narad ji asked, "What is this? What happened to Kailash?"
the kids reply, नारद जी सोच रहे कहाँ मैं तेरे को our father died काम already. अटक गया। And Narad replied, oh Kailash, see, I wanted to take you to Vaikunt and now you have died and अब नारद जी you have तो only gone to Svarga. And at that time, a dog arrived at the house of Kailash. And Naradji saw that that dog is no one another but Kailash himself in the body of that dog. His soul कैलाश कुत्ता took birth as a dog. Naradji said that, oh Kailash, you have taken birth as a dog. इतना पैसा आ गया That dog replied, oh Naradji, what should I do? गहने भी रखे I was so much attached to my kids and they have so much money, so much jewelry in our house. So it doesn't get stolen. I took birth as a dog so I can protect my house at night. बोलते पागल Naradji said, तेरी बुद्धि oh, खराब है। dumb, you are so dumb. और बुद्धि खराब के साथ साथ ये बोलती है बुद्धि बुद्धि बटे ढाई बुद्धि बटे ढाई ये पागल अभी चल सकता है वैकुंठ अभी ले जाऊंगा Naradji said that इसमें क्या सुख है? I can even take you to Vaikunt now as a dog, but करने में बड़ा आनंद why are you not coming with me to Vaikunt? Kailash said that, oh Naradji, you do not know how becoming a dog like. I have to protect the house of my kids. After some time, Naradji again came and saw that there was no dog, and Naradji asked, inquired to the kids of Kailash, what happened to the dog? The kids replied that that dog died. Now Naradji, so that okay, that dog also died. Naradji was roaming in some fields, in agriculture field, and he saw a snake there, and he immediately recognized this is Kailash. And he said, oh Kailash, now you have taken birth as a snake. What is this? The snake replied that, oh Naradji, इनकी जमीनों की you रक्षा know, करता हूँ। my kids have purchased some lands, this agricultural land, so that's why I died and took birth as this snake, so that I can protect this land of my kids. कुत्ता भी बनना पड़ा Naradji said that, oh Kailash, you are really so dumb, please leave this attachment of this wealth and your kids. Now I can also take you now to Vaikunt in this form of a snake. Please go with me, come with me. बोलते बच्चों The Kailash replied, no, I still want to protect this land. इतना बड़ा कोबरा एक Please come with me. I don't want to go with you. But Naradji is so clever. He went to the house of Kailash and told his kids that, oh kids, you know, there's a large snake in your land. Go and kill him, otherwise he will destroy all the agriculture land. Those kids went there and killed because they do not know it is Kailash. And now after getting killed by his own sons, Kailash left. कब तक मरते रहोगे बच्चों के लिए बड़ा कर दिया विवाह कर दिया उनके बच्चे हो गए अब छोड़ दो She left the body and छोड़ दो Naradji said जितना that 20-15 you have not साल taken का जीवन anything. बचा है ना So here Naradji is advising अब उसमें भगवान का Kailash नाम करो भजन that करो you कथा have सुनो सेवा for the करो rest of the time you should speak Hari Katha, you should listen Hari Katha, and don't interfere in your family. So leave your family and everything and do bhajan. So this is the so our also same thing also here. So next life will come to everyone. जीवन भी आ रहा है So और वो अच्छा हो कि बुरा हो so हमारे हाथ so में it कि हम depends आज on our अपने activity जीवन में क्या कर that रहे हैं। our next life will be good or bad. So try to be intelligent and think about this so that our next life will be good or bad. It depends on our activity. हम लोग जाएंगे तो हमारे So बच्चे हमको भूखाएंगे so next when we leave out this body, so then our karma will go with इतनी बड़ी us. शिक्षा नारद जी दे So Naradji, so he is giving आसक्ति होना अच्छी बात है उसके is पेट a high class teaching.
So attachment should be good, but it had a limit. It should be a limit. So we should not cross the limit. So at a limited stage, so we should do attach to our family, but at a time so at a time after crossing a age limit, we should think about ourselves. So sometimes we also seen that some person, he is in ICU, he is in hospital, so he is in ICU, he is in that bed. So that time he is also advising his son and daughter, so do this and that, do that. So he is guiding about his properties and everything, how they should deal with their property. So that's why this is our condition. So 50, 60. So at the age of 50 and near about 50, so we should change our habits. So now our lifespan is very short. So our ancestors, they live above 100 years ever, but now it's average 70, 75. So now the time has changed. So our average age is 50, 60 average, 60, 70 average. So that's why we should think about our age factor, and we should do our bhajan. So now we should do bhajan only. So we should read Srimad Bhagavatam, Sri Ramayan. We should follow Ekadashi. We should chant Hare Mahamantra. So and we should do also family works also. So but we have to add something in our life. What is we should add bhajan. So in 21C we have our temple, newly constructed temple, Sri Radha Madhav Gaudiya Math. So in every Ekadashi, so many devotees, they used to come from very far. So evening time, kirtan katha, so nice darshan, so everything is there. So same the feel of Vrindavan, you can feel like Vrindavan in this temple. Our Gaudiya is Radha Madhav Gaudiya Math. So evening time, katha kirtan, after that prasadam, Ekadashi prasadam. So after 15 days, so 2 Ekadashi in a month. So how much peaceful this fasting day, this Ekadashi day. So if I am not inviting you, so that's why I am bound that I am inviting all of you. So you all people giving your respect to me. You are giving your deep respects to me. You have give this Vyasasana to me. So that's why it's my duty to guide all you people. So our political leaders, they come to us for their own purpose. We also come here, but what is our duty? So we are connecting you with Lord Krishna. So how we are connecting? By kirtan, by Harikatha, and by the Katha of Srimad Bhagavatam. And in Srimad Bhagavatam, so many inspirations are there, so many inspired Harikathas are there. So we are always engaged in our household life. We are spending so much, so many days, so many years. So did we calculate about this? No, never. So that's why our days are passing only. So that's why. So we should correct us. We should correct ourselves. So don't be much attached in this kind of life. So we should progress our life in spirituality. So try to join in spiritually. So I have only one thing to give you all. I can give you Harinam. So I can give you Harikatha, or I can give you Harinam, the chanting beads. So chanting Harinam Mala. So I have only these things. This is the property of my whole life.
जो So, स्वीकार करना चाहते हैं so बड़े those प्रेम से आ who जाओ, ले जाओ। wants to accept this, who want this property to accept this, so please come to me, then I can give you this. So otherwise what happen? So ant also die. So every living beings will die one day. So after die, a person when he dies, his family members, they will remember him or her for a certain period, and after that everyone will forget. So what should be our duty? So our duty should be connect ourselves with Krishna. So this is our duty, and Gurudev is coming to join us with Krishna. So every day we get so many news that this person died by heart attack, this person died by accident. So many news come every day. So we say we are all in the same way. So everyone is going to die. So that's why we should change our life. So it's not very hard. It's very easy. You are doing your family work. You should do. No worry. But 1 hour, if we are going to sacrifice 1 hour, if 1 hour we are giving for God, for Krishna, so we have 24 hours. So 24 hours we are doing for ourselves. But we didn't. So in that 24 hours, so if we are not giving 1 hour to our Krishna, the Gurudev is saying we should die. So we should die. So father says that my son, he is not obeying my instructions. So many fathers I visit. So my son, he is always disobey me. So Gurudev is asking, so did you obey your father? So then he said, oh, I have given best service to my father. So then he said, so did you serve your forefathers? No. तो सोच कर देखो So- पिता के ऊपर पिता फिर उनके पिता फिर उनके Father पिता, of the कहीं father, तो father इसका of the father, father of the origin father. है? So who is origin? कहाँ जाता है सब So who is origin? So पिता के Krishna. पिता के पिता पिता के So पिता Krishna. स्वयंभू Krishna is the Swayambhu Manu. So father of the father, father of the father. So we are coming from Manu. So from Manu, we are the children of Manu. So we are called Manushya. स्वयंभू मनु के पिता हुए ब्रह्मा जी So who is the father of Swayambhu Manu? और ब्रह्मा जी So के पिता हुए भगवान जी the father of Swayambhu Manu is Brahmaji. Or who is the father of Brahmaji? So Brahmaji's father is Narayan. So Brahmaji manifested from, Brahmaji appeared from the navel or lotus navel of Vishnu. So then if we go through this sequence, then Krishna is our actual father. So our actual father, origin father is Krishna. इससे क्या होगा So if we are serving to Krishna, then we are pleasing all everything. So what is the, पत्ते में पानी डाला जाता है कि जड़ में so डाला if जाता you have a plant at your home, so where you pour water, so if you pour water in the root, then the whole then the whole tree is perished. You should not need to pour water in branches, in leaves, in the flowers. So if we pour water in the roots of the tree, then the whole tree will be nourished. So in that way, so root is Krishna. So if we are doing Harinam, if we are serving Krishna, then we are serving all our forefathers. So in Srimad Bhagavad Gita, he instructed so many things. So which teachings we are following? So we are son, we are part and parcel of Krishna. So how much teachings we are following in our life, in our daily life? So that's why Guruji is saying, so Guruji should be sometime, he should be hard, he should be rough. So he should be chastised us in that way that a mother, so she chastised her son sometimes. So sometimes she spoke, oh son, please take this medicine. Then son said, oh, I don't want to take the medicine. Then mother said, I will give you toffee, I will give you chocolate. So you should take this medicine. So what is the purpose of the mother? So mother's purpose is not to take the child toffee or medicine. So her purpose is to cure
the baby, killed her child. So that's why Gurudev is saying. So Gurudev is also so his purpose is same. His purpose is same. So he wants to connect everyone with Krishna. So this is his purpose. So he may be chastise us, he may guide us to love and care. So this is different ways. But so when Naradji enters in Brahmaji and Brahmaji Pralay time, in the Pralay Leela, Brahmaji entered in Narayan, and when again the Srishti, the creation manifested, then Brahmaji came, and through Brahmaji Naradji also manifested. So this is the character of Sri Naradji. So in Ram Lila, Krishna Lila, Narayan Lila, so without Naradji, so Lord Krishna, Lord Vishnu, so Ram Lila, so no Leelas can be happen without Naradji. So Guruji said, he will explain. So how Naradji is the base of Ram Lila, complete Ram Lila. So Krishna Lila, in Krishna Lila also, so Naradji is the base of Krishna Lila. So without Naradji, so no Lila will be happen.